Hello guys, my name is Dr. Huma Hassan and today I'm going to have a discussion on the structure of cell, that is topic 7 in biological anthropology in anthropology optional. Now, we know that it is very important for us to understand human genetics, okay? So now the trend is that UPSC is not directly questioning on what is cell, what is DNA, what is RNA, what is DNA replications, but it is very important for us to know its basics so that we can understand human genetics like 9.1, 9.2, 3, 4, 5, etc. Okay, so today in my class, I am bringing in highly easy language what is the difference between DNA and RNA, okay, and how much you have to learn. So let's start our discussion. So DNA, first of all, how you people should learn it. And this knowledge is going to help you in your science and technology as well. Okay, so DNA stands for deoxyribo. अब ये डीऑक्साइराइबो का क्या मतलब है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. डीऑक्साइराइबो क्या है? ये एक टाइप ऑफ शुगर है लेकिन डिफरेंट. ओके, सो टाइप ऑफ शुगर. N stands for nucleic, found in the nucleus of cell. Acid, it behaves like mild acid. So DNA, deoxyribonucleic acid. Now, this is what DNA stands for. Now you should know what is the function of DNA. Now, DNA is the instruction book of your body. It tells your body how to grow, how to look, how your cells should, work. So in short, DNA controls all life process. तो बस इसको ऐसे समझ लो कि जो डीएनए है वो आपकी बॉडी किस तरीके से दिखेगी, किस तरीके से काम करेगी, उसको कैसे वर्क कर रहा है, दैट इज इज इंस्ट्रक्शन बुक्स. अब लेट्स जैसे हमारे पास कोई कंप्यूटर आता है तो उसके साथ हमको एक इंस्ट्रक्शन बुक्स मिलती है ना, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. उसी तरीके से जो डीएनए है वो इंसानों की बॉडी में एक इंस्ट्रक्शन बुक्स है. ओके, वो बताता है कि हम किस तरीके से है. और अगर हम डीएनए को और मैं थोड़ा और डीपर बताऊं तो वो हमारे एंसेस्टर्स भी बता देगा. ठीक है, वो हमको बताएगा कि भाई डीएनए क्या है, सारी चीजें. तो आज के टाइम में हमको बहुत ही इजी लैंग्वेज में डीएनए को समझना है. ओके, सो बायो को या किसी भी फैक्ट को जब आप एज अ स्टोरी पढ़ोगे, एज अ स्टोरी इसको याद करने लगोगे, समझोगे, तभी यू विल सी एंड यू विल एंजॉय इट. ओके, सो हाउ योर सेल शुड वर्क एंड ऑल दैट. सो दिस इज डीएनए. Why it is called deoxide? D means removal. Okay, D means, what does it mean? D means removal. किस चीज का removal? Oxygen का removal. Okay, so it means removal of oxygen. It means removal of oxygen. इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो मिसिंग है. So DNA has a sugar called deoxyribose, which has one less oxygen atom than normal ribose sugar. Okay, so this is what you have to see. DNA has a sugar called deoxyribose, which has one less oxygen atom than normal ribose sugar. ओके, अब हम इसको एक डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अब इसका एक आपको शॉर्ट, बिल्कुल बहुत शॉर्ट डेफिनेशन दिया है. ठीक है, सो डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एन एसिड सब्सटेंस फाउंड इन द न्यूक्लियस मेड ऑफ शुगर दैट इज राइबोस दैट इज मिसिंग वन ऑक्सीजन एटम. ओके, डीएनए का लोकेशन डेफिनेटली न्यूक्लियस पे इनसाइड द क्रोमोसोम. दिस इज लाइक मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर वे में आपको एक्सप्लेन करा है डीएनए का स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल सी. डीएनए में जो साइड है दैट इज ट्विस्टेड लेडर. आपको एक मिनट देती हूँ, आप लोग इसको बनाइए. ट्विस्टेड लेडर, सो दिस इज डबल हेलिक्स. ये जो स्टेप्स है दिस इज बेस. ओके, सो दिस इज व्हाट यू पीपल हैव टू सी. व्हाट इज डीएनए मेड ऑफ? अब इसको हम यहाँ से शॉर्ट पे में लिखेंगे. सी, आई वुड सीरियसली सजेस्ट आप लोग ये नोट टेकिंग कर लीजिए. तो डीएनए स्टैंड फॉर deoxyribonucleic. So deoxyribo, type of sugar. Nucleic, found in the nucleus of cell. Acid, it behaves like a mild acid. So DNA, deoxyribonucleic acid. अब इसको हम क्या करेंगे? डीएनए इज द इंस्ट्रक्शन बुक ऑफ योर बॉडी.
It tells your body how to grow, how to look, how your cells should work. So DNA controls all life process. Why it is called deoxide? D means removal of oxygen. So one oxygen atom is missing. DNA has a sugar called dioxyribose which has one less oxygen item than normal ribose sugar. अब यहाँ से हम समझते हैं deoxyribonucleic acid का एक very easy definition. An acid substance found in the nucleus made of sugar that is missing one oxygen atom. What is the location of DNA nucleus inside the chromosome? It is twisted ladder, double helix, and this is its nucleotides. Okay. So what is DNA made of? What is DNA made of, guys? Each small unit of DNA is called nucleotide. Each nucleotide has three parts. Okay. One is sugar, deoxyribose, phosphate group, nitrogen base, ATGC. Okay. So how many oxygen or hydrogen atoms? It is a very large molecule. Okay. We don't count like H2O. Okay. तो ये एक बहुत ही बड़ा molecule है, हम उसको नहीं count कर सकते. So instead, each nucleotide, okay, we can see here like this. So you have oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus. So DNA has thousands of millions of atoms. DNA is a large molecule contain deoxyribonucleic acid that stores genetic information. तो आपकी जो genetic information है वो DNA ही के पास है and is made up of nucleotides containing sugar phosphate and bases arranged in double helix structures. Okay, so deoxy missing. An oxygen, ribo, sugar ribose, nucleotide acid found in nucleus. Okay, and this is how you people can just make a diagram. Okay, so ये तो हो गया आपका DNA. Now what is RNA? Similar like DNA, but कुछ differences हैं. RNA is a molecule that helps in making proteins in the body. Okay, if DNA is an instruction book, तो RNA क्या है? वो एक messenger है and worker. Okay, that follows those instructions. And this is what is composition. Ribo type of sugar, nucleic acid. So RNA, ribonucleic acid. So RNA is found where? Nucleus, cytoplasm, in ribosome. So RNA is a single-stranded molecule that helps in protein synthesis and is made up of phosphate, ribose sugar, nitrogen base, AUCG, uracil. So RNA has more oxygen than DNA. और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल आप लोगों को इसका सिंपल मैंने डिफरेंस बता दिया. DNA is double stranded, okay, single stranded. Dioxyribose sugar, ribose sugar. This is its base. This is its base. It stores information. It helps making proteins. Okay. So this is the easiest explanation I have given to all of you with respect to biological anthropology, DNA and RNA. Next class में हम DNA replications को easy language में पढ़ेंगे. Okay. So keep watching my lectures. And you people have to understand that biological anthropology is static in nature. Okay, so you do not have to put lot of efforts into it. एक बार इसको समझ लो, concept समझ लो, उसका एक short notes बना लो and write it down. And do remember, it is not biology; it's biological anthropology. So whatsoever biological concepts you people are reading, you need to learn an art of writing anthropological perspective. तो DNA, RNA में evolutionary mechanism क्या है? ओके, ये सारा जो पॉइंट बताया ये फैक्ट है, ये आप फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करो. बट आपका जो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है एंड एन आर्ग्यूमेंट शुड साउंड like biological anthropology and not like biology. Thank you.